Okay, so welcome back. So I was talking about the difference in the periodic nature of discrete time exponential signal, which is mathematically represented in this manner. So one of the things that we observed, which is not present in the continuous time exponential signal, is that this omega naught, if you start with omega naught equal to 0, and then if you keep on increasing omega naught, so after your frequency becomes equal to omega naught plus 2 pi, you again get the same signal. So it means the for discrete uh, time exponential signal, we need to consider only this interval, either 0 to 2 pi or from minus pi to plus pi. Okay. So for this type of signal, we only need to observe the behavior of the signal between this interval. After this interval, the signal behavior will be repeating itself. The second point is, so let's assume that omega naught is 0. This is your starting frequency. If you put omega naught equal to 0, you get a constant signal, and we know that constant signal is periodic. And now if you start increasing omega naught, so omega naught equal to 0, and then you start increasing it. So from omega naught equal to 0, we start increasing omega naught. So omega naught equal to 0 is a constant signal, but it is periodic. But as you increase omega naught, so it means the rate of oscillation will increase. As soon as omega naught becomes equal to pi, we get the maximum rate of oscillation. We get the maximum rate of oscillation. And if if we further increase, and if we further increase omega naught, the rate of oscillation will start decreasing until omega naught becomes equal to 2 pi, and we get the same constant signal, this one. So another point that we need to identify is that for discrete time exponential signals, the maximum frequency will be when omega naught is equal to pi or it is close to pi. And if frequency is equal to 0 or if frequency is close to 2 pi, then it means it is a low frequency signal. Now, if you compare this statement with the statement I made about this signal, what I mentioned about omega naught, that as you increase omega naught, the rate of oscillation will increase. If you keep on increasing omega naught, and the rate of oscillation will increase and increase and increase, and this trend will continue up to maybe in omega naught equal to infinity. But now in this discrete time case, if you start with omega naught equal to 0, you get a low frequency signal, which is a constant signal.
When you increase omega naught, so the rate of oscillation increases, and at this value, omega naught equal to pi, you get the maximum frequency. Now you are expecting that if you further increase omega naught more than pi, the frequency will further increase, but it is not like that. After omega naught equal to pi, if you increase omega naught more than pi, the frequency or rate of oscillation will start decreasing. It will decrease, 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 and when omega naught becomes equal to 2 pi, you get the same situation. That is, it again become a constant signal. So that is another difference that you need to understand. Also, as I mentioned that for discrete time periodic signals, if omega naught is close to 0 or omega naught is close to 2 pi, it means it is a low frequency signal. And if omega naught is equal to pi or omega naught equal to minus pi, it means you are dealing with a higher frequency. That is what I mentioned. Now let's come to the another point. For this signal, we mentioned that it is periodic and the fundamental period is 2 pi by omega. This is something that we have covered. Now, what about this signal? What is the fundamental period of this signal? Or the question is it periodic or is it periodic? So again, we can use the condition that we have developed to check the periodic nature of any signal. So what is that condition? If any periodic discrete time signal is periodic, it must fulfill this condition. For all values of n. So let's test this signal based on this condition so that we can find answer to this question. So e to power j omega naught n equal to e to power j omega naught small n plus capital N, which means on the right hand side we have ej omega naught n e to power j omega naught capital N. Now, in order to fulfill this condition, what is the requirement? N is equal to ej omega naught capital N must be equal to 1. Now we already know that this omega naught equal to 0 is one possibility, but omega naught equal to 0 is a very special case, which means we are dealing with a constant signal. So I don't want to find out that special case that when omega naught is equal to 0, this signal will be constant, and we know that it will be periodic. I am more interested in that situation when omega naught is not equal to 0. So under that case, what is the possibility that omega naught is not equal to 0, but we still get this to be equal to 0? तो क्या कंडीशन होगी जी? sir omega naught is equal to 2 pi divided by Yes, तो इसको मैं जनरलाइज कर लेता हूँ. इट मीन्स कि ये आपके पास जो ओमेगा नॉट n है, it must be equal to some multiple of 2 pi. So let's assume कि मेरे पास ये किसके बराबर है? 2 pi m के बराबर. So whenever we have this condition कि omega naught n multiple of 2 pi होगा, इसका आंसर 1 के बराबर आएगा. So omega naught n को मैंने 2 pi m के बराबर. And of course ये जो मैंने m इंट्रोड्यूस किया, ये m क्या चीज़ है? It is some multiple, or you can call it is integer.
So we have this condition now that for discrete time periodic signal, uh, इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ कि ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई must be equal to m divided by n. Now, why I have written this condition in this manner is because of one of the reason that for this signal to be periodic, it must fulfill this criteria. And what is that criteria telling us? That omega naught divided by 2 pi must be equal to m by n. What is m? M is an integer. What is n? Yes, sir. What is n? Period. It is period, but it is also Integer. integer. So integer divided by integer, what kind of number is this? Rational number. Integer. Rational number. Yes. Constant. Not Rational. constant. Rational number. Integer ही होगा. ठीक है. So that is one important point that I was interested in deriving. That for this signal, that is x of n equal to e raised to power j omega n, as well as if you have a signal cos omega naught n, or if you have a discrete time signal equal to sine omega naught, they can only be periodic if they fulfill this criteria. And what is that criteria? That omega naught divided by 2 pi must be some rational number. If you don't get a rational number for any of these signals, then they will not be periodic. So now you compare this difference with the signals like x of t e raised to power j omega t, x of t equal to sine omega t, or x of t cos omega t. If I ask you this question, are they periodic? What will be your answer? Yes. You will say yes. 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 Sir. Without testing any criteria. But now if I ask you the same question about these signals, what will be your answer? Must fulfill the condition. They must fulfill this criteria. If they fulfill this criteria, I will say they are periodic. If they don't fill this criteria, I will say they are not periodic. So that is the main difference that I wanted to point it out between continuous Sir, time, continuous. discrete time. Excuse me, sir. जी जनाब. सर ये जो आप m लेके आ गए, ये जब हम कंटिन्यूस में कर रहे थे उसमें सर अब हम अगर m लेके आते तो इसमें तो सिर्फ फर्क n और t का है ना, बाकी इक्वेशन एक जैसा है. एक में सर आप m लेके आए और उसमें m नहीं था. नहीं तो उसमें उसके भी लिए n सारे था. रूल्स अगेन चेंज हो गए. वो अगेन वो उस वक्त मैं एक बड़ा स्पेसिफिक पीरियड की बात कर रहा था. वो कंडीशन यहाँ पे भी Yes, वहाँ sir. पे भी वैलिड है. अगर मैं इसको लिख लेता हूँ ताकि तो आप वो कंडीशन बना के इस तरह अगर ये सर नहीं वो से नहीं आएगा. लेट्स फाइंड इट आउट. आप जो कह रहे हैं उसको मैं भी पता कर लेता हूँ. आप मेरे इसकी बात कर रहे थे कि x of t is equal to x of t plus t whole t. So we said e j omega naught t must be equal to e j omega naught t plus t. So you get e raised to power j omega naught t e raised to power j omega naught capital T. So in order for this condition to be valid, e raised to power j omega naught t must be equal to 1. Yes. Yes, sir. Now for this condition to hold, it means again omega naught equal to 0 को हम साइड पे कर लेते हैं. omega naught 0 स्पेशल केस है. We know Yes, sir. वो कांस्टेंट सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है और उस केस में भी सिग्नल हमारा पीरियोडिक होगा. सो अगर इसको जनरलाइज करूं, मैं कहूंगा कि e पर जो ओमेगा नॉट टी 1 के बराबर तभी होगा जब ओमेगा नॉट टी जो है मल्टीपल ऑफ पाई के बराबर हो. ठीक है. इसको मैं यहाँ पे केस से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. बट अगेन दिस केस व्हाट केस के क्या चीज है? इंटीजर. जस्ट टू मेक ए डिफरेंस. वहां पे क्यों कंटिन्यूअस टाइम में m शो कर रहा था,
इस वक्त कंटिन्यूअस टाइम के लिए एक डिफरेंट मैंने सिंबल, बट इट इज स्टिल एन इंटीजर. ठीक है सर. Okay. So now, what is the criteria? Omega naught t equal to 2 pi k. So let me, okay. इसका मतलब है कि t is equal to 2 pi k divided by omega naught. So these are 2 पाई नीचे रहने देना उसकी तरह, जिस तरह k डिवाइड बाय w नॉट था उस इक्वेशन की तरह तर्ज में बना ले. उससे क्या हो जाएगा? 2 पाई नीचे रहने दे, तो इसके लिए फिर सर ये कंडीशन बन गया ना उसकी ओके, तरह. बना लेते हैं. क्या आप क्या लिखूं मैं? आप बताएं. चलिए, आप जो बता रहे हैं मैं वही लिख रहा हूँ. चलिए बताएं क्या लिखूं. t डिवाइड बाय 2 पाई k डिवाइड बाय t ना सर divided by, ऐसे नहीं, ओमेगा 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 नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई और k को नीचे उधर t के नीचे लेके ओके जी, t क्या डिवाइड बाय लिखूं? k इज इक्वल टू 2 ओमेगा पाई नॉट डिवाइड बाय ओमेगा नॉट. डिवाइडेड बाय 2 pi, ये कह रहे हैं आप? यस सर लिखूं इक्वल टू, यस सर. इक्वल टू t डिवाइड बाय k k डिवाइड बाय divided. t. k divided by t. यस, लिख दिए. अब तो सर ये भी सर ये उनकी तरह कह रहे हैं कि कंडीशन बन अभी गया. ये तो सर k ये डिवाइड तो बाय सब इंटीजर. रियल नंबर के लिए वो सेटिस्फाई होगा, वो सिर्फ रेशनल के लिए होगा. यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट. ये इसका आंसर है. ये की क्या चीज है? व्हाट इज के? इंटीजर है, व्हाट अबाउट इंटीजर टी? है सर. व्हाट अबाउट टी? पीरियड है, सर t फंडामेंटल पीरियड पीरियड है. है. नहीं, क्या है ये सर? आप कह रहे हैं कि ये इंटीजर है. ये ये क्या सर चीज है? ये किस किस्म का नंबर है? ये भी ये भी इंटीजर इंटीजर है. है. ये भी इंटीजर है. इंटीजर. चलें जी, ये तो जो आप, ये जो अपनी आपने आंसर दिया है, इसी में आपकी कंफ्यूजन है. क्या टी नहीं सर, हमेशा टी इंटीजर. टी इंटीजर होगा? टी हमेशा टी 1 रियल होगा, नंबर है 2 सर जी. होगा, 3 होगा, 4 होगा? क्या टी एनी नहीं रियल सर, नंबर है सर जी. 1.2 नहीं हो सर सकता? n भी 1.3 नहीं हो वहां पे सकता? सर. एन सर ही वहां पे पॉसिबल जो है ना. n की बात कर रहे हैं सर, जो हमने n लिखा था उसको सर आपने इंटीजर बोला था, तो वो भी तो इंटीजर नहीं है. n को अगर आप इक्वेशन में हमने ऊपर पुट किया था तो उसको हम सर टाइम पीरियड आपने, ही बोलते हैं ना. चलें जी, आपने पहला लेक्चर लिया मेरा? फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया ये डिस्क्रीट यस मैंने? आपने पहला लेक्चर अटेंड किया कि नहीं इंटीजर किया? होगा. यस सर किया है मैंने. उसमें किया है. तो आपके ख्याल में डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए हमने क्या कहा था कि एन, एन क्या चीज़ है? ये अभी तक जो आज पूरे लेक्चर में मैंने प्लॉट भी किया था, जब मैं एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को प्लॉट कर रहा था, ये एन को मैं क्या ले रहा था? ये क्या चीज़ थी? ये जो मैं यहाँ पे शो कर रहा था, ये क्या चीज़ है? एन है. ये क्या वैल्यूज हो सकती हैं आपके ख्याल में? इंटीजर सर जी, डिस्क्रीट वैल्यूज. 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3. तो अगर इस जो भी यस सर. सिग्नल है एक्स ऑफ एन है, इसका पीरियड अगर मैं आपको कहूँ क्या होगा, तो वो पीरियड हमेशा क्या होगा? इंटीजर. इंटीजर होगा. और जब हम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की बात करते हैं, वहां पर एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर. यस, दैट इज द आंसर तो क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि इस केस में ये टी की जो वैल्यू है कुछ भी हो सकती है. तो हाउ कैन यू से कि ठीक है टी सर, जो है अभी वो इंटीजर होगा? ठीक ओके, है सर, अभी कंफ्यूजन क्लियर हो गई आपकी? ओके, यस सर, थैंक यू. वेलकम. ओके, सो now we know how to check the periodic nature of a signal. So let's test your knowledge and solve some examples so that you fully understand this idea. Let me consider two signals, first in continuous time and then in discrete time. Continuous time में मेरे पास एक सिग्नल है cos 2 pi small t divided by 12, और इसका एग्जैक्टली डिस्क्रीट टाइम में एक वर्जन है जिसको मैं लिख रहा हूँ cos 2 pi by 12 divided by. So if I ask you this question, is this periodic?
Yes, ये periodic है. Yes, sir. yes sir ये Oh. periodic ही है. Okay. And what is the period? 2 मतलब pi by 6. Pi by 6. 6. What is the period of this signal? 1/12. Period. 2 pi से 2 pi इसका पीरियड 2 पाई होते हैं. 2 pi by 6. 12. थोड़ा सा और Zero हो जहन गया सर. जहन पे जोर डालें जी. इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है जी? 2 pi. सर 2 pi by 6 omega naught. 5 by 6. चले जी, ये तो हम बहुत फिर पीछे जाना पड़ेगा हमें दोबारा से कि आप लोग इस सिंपल से सिग्नल का पीरियड नहीं बता सकते. सर 1/12 सर 1/12. फंडामेंटल पीरियड और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की रिलेशनशिप हम डिराइव कर चुके हैं. उसके बेस पे आई एम आस्किंग यू कि इसका फंडामेंटल पीरियड बताएं. 1/12 सर. 1/12. आप कह रहे हैं कि मैं टी की जगह लिखूंगा 1/12. रेशनल नंबर आ रहा है सर. रेशनल चलें जी सर पीरियोडिक है सर. ओके जी, थैंक यू फॉर अगेन. किसी ने मुझे बताया कि रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट नहीं की हुई थी अभी तक. नहीं सर स्टार्ट तो थी, पहले से हम लिख रहे थे. आई डोंट नो. जी मोहम्मद हारिस ने मैसेज किया कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं की. क्या शुरू से रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी कि दरमियान में कहीं मुझसे मिसप्लेस हो गई जी? नहीं शुरू से सर ऑन थी. शुरू से ऑन थी सर. हम लिख रहे थे. ओके चलें. इस तरह बाज़ औक़ात ड्यू टू सम रीज़न मुझसे अगर कभी भी लेक्चर के दौरान में रिकॉर्डिंग आपको नज़र आ रही हो कि मैं नहीं की तो मुझे प्लीज़ रिमाइंड करा दिया करें. ठीक है. ठीक है सर जी. ओके चलें जी. हम किसका देख रहे थे? हाँ चला गया. यस. सो कुछ लोग कह रहे हैं कि नो है, तो वो कह रहे हैं कि इसलिए नो है कि इरेशनल नंबर है. और इरेशनल नंबर क्या रहा है आप लोगों के पास जी? व्हाट इज द इरेशनल नंबर जो आप कह रहे हैं कि आ रहा है? चलें जी, कह रहे हैं यस वो बता दें. चलें जी. यस. सर जी पीरियोडिक है और 4 रेशनल by नंबर 31 सर, ये रेशनल आएगा. ओके. और क्या 7.75. क्या रहा है आपके पास? 7.75 पीरियड आता है इसका. पीरियड क्या आता है दोबारा बताएं. 7.75. चलें जी. अब आप ये 7.75 क्या अभी अभी हमने कुछ मतलब डिस्कस नहीं सर किया था? इंटीजर तो नहीं हुआ. इंटीजर तो 31 नहीं इंटीजर हुआ. तो पर नहीं हुआ. यस. तो ये ये देखिए सर ये आपके कुलीग ने बता दिया है कि आप मिस्टेक कर रहे हैं. जी फीमेल तो स्टूडेंट इसका की मतलब आवाज ये आ रही है, वो periodic बता है. रही थी. क्या है जी आप कह रही हैं कि क्या आ रहा है जी पीरियड आपके पास? जो 4 कह by रही थी कि 31. 31. तो आपके पास जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 4/31. क्या आ रहा था? 4 by 31. 4/31 which is a rational number and 31. 31 is the period. Yes sir. Yes. ठीक हो गया. चलें जी एक और एग्जांपल कर लेते हैं. You have a signal x of t is equal to cos t by 6 and you have a signal x of n is equal to cos of n by 6 and now you need to tell me about their periodic nature. ये periodic है या नहीं है? ये है सर और सर नीचे ये वाला तो नहीं. है बगैर पूछे. नीचे वाला बगैर नहीं है पूछे. सर. ओके. तो लेकिन पूछना क्या पड़ेगा आप लोगों से कि पीरियड बताएं जी, जो आप बहुत से अभी तक गलत बता रहे हैं मुझे जी. इस केस में मेरे ख्याल में सबको सही बताना चाहिए कि क्या पीरियड होगा इसका. सर 12 पाई. सर 12 12 pi. pi. 12 pi. जी क्या लिखूं जी? 12 pi. 12 पाई. कोई और आंसर है जी? यही है सबके पास आंसर 12 पाई.
Yes, sir. 12 pi. Okay. What about this signal? सर नहीं है ये. नहीं है नहीं सर जी. नहीं है. और क्यों नहीं है? ओमेगा नॉट ओवर 2 पाई 1/6 आएगा तो वो रेशनल नंबर नहीं है सर. ओमेगा नॉट बाय 2 पाई किसकी बराबर आ रहा है? 1/6. 1/6. तो 1/6 रैशनल नहीं है. 1/6 रैशनल नहीं है जी. someone else? नो सर, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि ये खत्म ओमेगा नहीं हो 12 pi सकता ये जा रहा रेशनल नंबर है सर. जी क्या कह रही हैं आप? ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/6 सर. तो क्या आपके पास क्या नाम आंसर आ रहा है? क्या लिखेंगे? ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई किसकी इक्वल आ रहा है आपके पास? जिसके बेस के ऊपर आप लोग मुझे बता रहे हैं कि ये पीरियोडिक नहीं है. रेशनल तो है सर. रैशनल है. सर इसका पीरियड भी इरेशनल आएगा तो सर m डिवाइड बाय इरेशनल नंबर वो इरेशनल नंबर आएगा सर. तो क्या है वही जो मैं पूछ रहा हूँ. तो आप मुझे बताएं ना कि ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई किसके बराबर आ रहा है? m डिवाइड बाय 12 पाई सर. 1 डिवाइड बाय m डिवाइड बाय 12 पाई सर. वो m कहाँ पे आ m गया? इंटी व्हाट इज m? यू मस्ट नो अबाउट m. सर m1 के बराबर है और n 12 pi के बराबर है. 12 पाई के बराबर है. यस 1 over 12 पाई आएगा which is irrational number. So it means it doesn't fulfill this criteria. Omega naught 2 pi is not equal to m by n some integer divided by integer. Okay. So this is how you can test कि ये हमारे पास periodic signal नहीं सर है. समझ नहीं आई सर, फिर से Let दिखाएं सर, me समझ नहीं आई. let me share the attendance link because हमारे पास last 10 minutes रह गए हैं and then we can answer any question that you have. सर ओके जी ये लास्ट मैंने वर्ड की समझ नहीं आई. ओके अटेंडेंस लिंक मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी है चैट विंडो में. सो विद इन 10 मिनट्स आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें. सो द हमारा जो आंसर था ये इसकी तरफ चले जाते हैं. ये cos n/6 है. तो क्वेश्चन था कि ये पीरियोडिक है या नहीं है. तो आप सब लोगों ने बताया कि नो है. नो का रीजन क्या था? किस बेस पे आप नो कह रहे हैं? जो हमने क्राइटेरिया डेवलप किया है कि अगर एक सिग्नल पीरियोडिक होगा डिस्क्रीट टाइम में तो उसके लिए ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई एक इरेशनल नंबर आना चाहिए. ठीक है. इस केस में जब आप ओमेगा नॉट डिवाइड बाय 2 फाइंड करते हैं तो आपके पास आ जाता है 1 over 12 पाई जो कि रैशनल नंबर नहीं है जिसके बेस के ऊपर आप कह रहे हैं कि ये नॉट पीरियोडिक. सो नाउ यू नो कि किसी भी डिस्क्रीट टाइम में किसी भी सिग्नल को पीरियोडिक आप डायरेक्टली नहीं कह सकते. यू नीड टू फर्स्ट चेक इट्स क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द कंडीशन जो हमने डेवलप की है. ये दिस वन. एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आप नोट कर लें कि मैंने इसको लिखा हुआ है कि m/n है. ठीक है. सो ये जो डिनोमिनेटर में आपके पास है ये इसका पीरियड होगा. ठीक है. बट यू नीड टू मेक श्योर कि ये जो आपके पास रेशियो आ रही है इसको आपने रिड्यूस करना है टू इट्स फॉर्म ताकि आपके पास व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आपके पास इस तरह आ जाए कि ये आ जाए 2/12 आ जाए. m/n किसके बराबर आ जाए? 2/12. तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसका पीरियड 12 है. पहले आप इसको रिड्यूस करेंगे किसमें? 1/6. अब आप कहेंगे कि इसका जो पीरियड है वो 6. सो मेक श्योर कि जो रेशियो है इसको आपने फैक्टर आउट करना है ताकि आपके पास ये 2/12 को 1/6 फॉर्म में लिख सकते हैं. तब जाके आप कहेंगे कि डिनोमिनेटर में जो टर्म है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू. एंड बिफोर आई
कंक्लूड टुडेस लेक्चर, एक लास्ट एग्जांपल हम कर लेते हैं कि अगर आपके पास दो सिग्नल्स हों, सॉरी एक सिग्नल हो जो कि सम ऑफ टू सिग्नल्स हो, लेट्स से 2 पाई बाय 3n प्लस e to power j 3 pi by 4n. So this signal is now made up of two signals. So in order to find out कि क्या ये सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं है, और अगर ये पीरियोडिक है तो फिर इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, ये आप कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द पीरियड, पहले आप अगर इसका मुझे पीरियड बता दें कि इसका फंडामेंटल या ये पहले पीरियोडिक है या नहीं है, और फिर इसका फंडामेंटल पीरियड अगर मुझे आप बता दो, और इसी तरीके से इसका फंडामेंटल पीरियड अगर तो ये पीरियोडिक है क्या होगा। कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन? ये सर पहले वाला ये एडवांस पीरियोडिक है और इसका फंडामेंटल पीरियड 3 आता है। ओके, और दूसरे का 4 आएगा, नहीं 4 बाय कुछ इस तरह आएगा, 6 आएगा, 6 बाय नहीं 4 बाय 3 आएगा, 3 टू द 6 इसका। जी कोई और आंसर बताए जी। एक तो ने बता दिया जी, ये पीरियोडिक सिग्नल है, इसका फंडामेंटल पीरियड 3। अब इसके बारे में हम सोच रहे हैं कि ये पीरियोडिक है या नहीं है। अगर पीरियोडिक है तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है? सर ये 8 बाय 3 है। 3 by 8 by अगेन एक चीज आप लोग फिर बार बार भूल रहे हैं चाहते हैं, ये इंटीजर में नहीं आता, अगर डिवाइड में आता है ये नहीं है, ये पीरियोडिक ही नहीं है। चलें ये पीरियोडिक नहीं है। ओके सर। चलें जी, एक दूसरा आंसर आ गया। बिफोर आई गिव माय आंसर थोड़ा सा और आप लोग सोचें, बताएं। सर इनटू 8 है सर। ओके तो इसका मतलब है कि ये पीरियोडिक है। यस सर। और कितना है? 8 सर 8। ओके अब बताएं कि इस सिग्नल का पीरियड क्या होगा जिसको मैंने n कहा। LCM of these two, क्या होगा? इस दोनों का LCM लेना है सर। क्या होगा जी, क्या होगा? 24। 24 करेक्ट आंसर। सो यू नीड टू फाइंड आउट कि ये जो सिग्नल है और ये जो दूसरा सिग्नल है, इन दोनों का कॉमन पीरियड क्या होगा जब ये अपना मल्टीपल ऑफ पीरियड्स प्रोड्यूस कर लेगा, 3 6 9 12 15 18। तो इसका और इसका जो कॉमन जो पॉइंट होगा, ये वो पॉइंट होगा जिसके बाद ये सिग्नल जो है अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। ठीक है, सो दिस इज द क्राइटेरिया जो आप लोगों ने बता दिया किसका आप लोगों ने कॉमन। सर ये 8 के समझ नहीं आ रही बार बार सर, ये 8 कैसे आया सर? ये कंडीशन जी मैं अगेन दिस इज समथिंग जो आपने खुद थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको ये रूल बता दिया जी, ओमेगा नॉट सर, एक डिवाइडेड बार बाय 2 पाई फाइंड करना है। ठीक है, इससे जो भी नंबर आएगा और उस अकॉर्डिंगली जो मैंने कहा है m बाय n होगा, और मेक श्योर कि ये m बाय n जो है इसको आपने रिड्यूस करना है ताकि ये आपस में कैंसिल ना हो सकें। तो जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में जो कुछ भी होगा वो इसका पीरियड होगा। इस केस में जब आप करेंगे ओमेगा सॉरी ओमेगा नॉट बाय 2 पाई जब आप करेंगे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास 8 आएगा जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि इसका पीरियड 8। अब ये अगेन इट इज नॉट कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन नहीं है कि आप ओमेगा नॉट 2 पाई से नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये आप निकाल लेंगे तो आपके पास ये आ जाए। ठीक है सर और उसके बेस पे आपके पास कॉमन पीरियड 24 आ जाएगा जो कि इस सिग्नल का है, जो कि इस सिग्नल और इस सिग्नल की एडिशन से बना हुआ है। ओके ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो एनी क्वेश्चन? जी जी बोलें। सर अगर इन केस यहाँ पर इनटू हमारे पास इरेशनल होता तो फिर हम n क्या लेते सर? n2 क्या होता? अगर इनटू इरेशनल होता सर व्हाट डू तो मीन बाय फिर रेशनल? हमारे n2 रेशनल किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल क्या कह रहे हैं? n2 क्या होता है? लेट्स इनटू पीरियोडिक नहीं होता ना, क्या मतलब होता? ये जो 1 बाय 3 होता सर जी, फॉर एग्जांपल 1 बाय 3 होगा। 1/3। अब क्वेश्चन ये है कि क्या n2 1/3 हो सकता है कि नहीं हो सकता? इस पे थोड़ा सा आप सर नहीं सोचें। हो सकता सर, ये क्योंकि इंटीजर आएगा तो Integer मतलब वो होगा। पीरियोडिक ही नहीं है ये मतलब सर। सर जी
इसका कहने का ये मतलब है, अगर दूसरा नॉन पीरियोडिक हो, नॉन पीरियोडिक हो तो ये भी नॉन पीरियोडिक होगा, ये भी नॉन पूरा पीरियोडिक। पूरा नॉन पीरियोडिक हो यस 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 सर, यस। पीरियोडिक प्लस नॉन पीरियोडिक, नॉन ओके पीरियोडिक। ओके ओके। कुछ स्टूडेंट मुझे कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, तो अगेन बाकी लोगों को आवाज आ रही है, इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम आपके एंड पे है। और अगेन क्योंकि लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अब अगर दोबारा से आप, अगर लेक्चर का कोई पार्ट आपसे मिस हो गया, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो चीज आप नहीं देख पाए थे वो आप देख लेंगे, ठीक है। Okay, ठीक so है सर। that's it for today. Thank you very much. See you next week, inshallah. Allah Hafiz. अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।